जस्ट कंफर्म करो मत शुणी पारुछ शुणी पारुछ मत कंफर्म करो टिके ओके ओके ऑल राइट तो हमें वी वर टॉकिंग अबाउट द डेटाबेस डिजाइन आउ काली भी हमें आउ के तरह तरह एस्पेक्ट्स विषय हमें पढ़िलु केमती हमें डिजाइन करिपरिबा सो हमें बेसिकली इफ यू मूव्ड फ्रॉम talking about the overview of the design phases रे जो तीन टा फेज होते ता विषय we talked and then we talked about केमती ताको रिप्रेजेंट करा जाए जो एंटिटीज हो कि रिलेशनशिप्स हो ताको केमती रिप्रेजेंट करा जाए हमें सेटा सब देखिछु तो टुडे आई विल कंटिन्यू अच्छा आउ गोटे एस्पेक्ट वी आल्सो टॉक्ड अबाउट इज द कार्डिनैलिटी इन द सेंस को भले रिलेशनशिप हे पारे आम देखिलु 1 to 1 मेनी टू 1 है केमती रिप्रेजेंट करा जाए ईआर डायग्राम रे हमें डेटा सब आम देखीचु सो आई विल जस्ट कंटिन्यू फर्दर एंड टुडे okay so I will continue further and we will see how we can do some more things with cardinality okay all right so just present my screen. Okay. So we have talked about overview, we talked about the entity relationship model, we talked about complex attributes also. एटा तमें काली आमे देखिथिले फॉर एग्जांपल नेम हो नेम रे जो तीनटा कंपोनेंट होचे फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम है सो तीनटा जाको मिसे की वी मेक यू कॉम्प्लेक्स एट्रिब्यूट से बढ़िया if we have some attributes which have some underlying components, so we'll call them as the complex attributes. तापरे we looked at cardinalities है ना so जो many to one one to many से विषय हमें कथा हेलो so we will go ahead and talk about some more uh, aspects of that. Okay, so let's see what we have today. Okay, so okay, so the last thing that we talked yesterday was about the total and partial participation. Total and partial participation विषय में कथा हेलो कि जो हमें दुईटा एंटिटीज विषय कथा होचु तांकर रिलेशनशिप विषय कथा होचु so they might have total participation किंबा partial participation. Total participation रे हमें जानिबा that गोटे एंटिटी सेट रे जतरे भी एंटिटीज अछि अन्य एंटिटी सेट को रे समस्त संगे तार रिलेशनशिप अछि बट इन पार्शियल पार्टिसिपेशन केतरा एंटिटीज एमती भी थाई पारंती जहांकर रिलेशन नाही so that's what we had so generally ये जो हमें लास्ट क्लास रे पढ़िले अबाउट वन टू वन वन टू मेनी सो ताकू हमें केमती ईआर डायग्राम रे केमती हमें रिप्रेजेंट करि परिबा how to represent these relationships how to represent these relationships in a particular ER diagram सेटा में देखिबा है ना so a line may be associated line may have an associated minimum and maximum cardinality है ना so either minimum किंबा maximum cardinality how this is shown in the form I dot h I is the minimum I is the minimum h is the maximum cardinality है ना तो जहाँ भी हमें एटा प्रीवियसली पढ़िछु एटा तार रिप्रेजेंटेशन ईआर डायग्राम रे तार रिप्रेजेंट so minimum value of 1 indicates total participation है ना how the maximum value of 1 indicates that the entity participates in at most one relation है ना so एटा मन रखिबो एटा l dot dot h फॉर्म रे अछि है तो l dot dot h फॉर्म रे अछि आ हमें एथरे 1 l जगह रे 1 लिखिले ता माने होछि टोटल पार्टिसिपेशन है
ଆଉ h ଜାଗାରେ 1 ଲେଖିଲେ it means that the entity participants in at most one relation ହେଲା so and a maximum value of star ହେଲା so ये जो ଆମେ जो asterisk use करଛୁ that represents maximum value there is no limit तो ଏଇଟା ଗୋଟେ example ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଏଥିରେ we have the instructor entity set our student entity set and they have this relationship called advisor so an instructor is a advisor okay the instructor is an advisor to the student तो ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ left hand side ରେ 0 dot dot star ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି 1 dot dot 1 ଲେଖା ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ the cardinality is expressed in the form L dot dot H where L is the minimum H is the maximum L ଜାଗାରେ ଏଠି 0 ଅଛି ଏଟା 0 so 0 ମାନେ କ'ଣ the instructor can advise 0 or more students ହେଲା 0 ମାନେ 0 or more students ହେଲା ଆଉ a student must have one advisor and cannot have multiple advisors এইটা କେମିତି ଜାଣୁଛୁ ଆମେ ଏଇ 1 dot dot 1 ओके तो ଆମେ ଏଇ 1 dot dot 1 जोटा ଆମେ देखुଛୁ राइट साइड रे this represents the student's cardinality ଆଉ 0 dot dot star this represents the instructor's cardinality ହେଲା 0 ମାନେ ସେ କାହାକୁ ଗାଇड ବି ନ କର କାହାର ବି ଆଡଭାଇଜର ନ ହେଇପାରନ୍ତି କି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବି ଆଡଭାଇଜର ହେଇପାରନ୍ତି but in case of the student you can have at most one advisor so maximum ରେ ଦେଖ ମାନେ at least ଗୋଟେ ହେବା ଦରକାର ଆଉ at most one so maximum value of 1 indicates that the entity participates at most one relationship but student ro must have one advisor and cannot have multiple advisor because ଏଥିରେ star ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମୁଁ କହିଥାନ୍ତେ କି ଗୋଟେ student ର multiple advisors but since it is star ନାହିଁ so we can tell that there are no multiple advisors in this particular place over here so moving on ଆମେ ଆଉ କେତେଟା ତାର ଦେଖିବା so we allow at most one arrow out of a ternary relationship to indicate a cardinality constraint so ଆମେ ଏବେ ଯାଏ one to one one to many ଦେଖିଛୁ so ଏଇଟା ଆମେ କଥା ହଉଛୁ about a ternary relationship ଯୋଉଥିରେ ବେଶୀ relationship ହେଇପାରେ for example an arrow from the project guide to instructor ହେଲା so ଆର picture ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ but so an instructor is advising the student but he can also be a project guide or project guide भी ହେଇପାରେ so for example an arrow from project guide to the instructor indicates each student has at most one guide for a project so ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ହେଲା so ଆମେ ଏଇ କେସରେ ଖାଲି instructor ଆଉ student ଦେଇଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ project guide ବି ହେଇପାରେ table ଯୋଉଥିରେ it indicates the students have at most one guide for a project over here if there is more than one arrow there are two ways of defining the relationship right? So a ternary relationship R between A, B, C with arrows to B and C could mean each A entity is associated with a unique entity from B and C over here. So basically ଆମେ ଏଇଟା କହିପାରିବା କି ଯୋଉ ଯେବେ ଆମେ ତିନିଟା ଏଣ୍ଟିଟି ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହଉଛୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଦେଖିବା ତାର we have a diagram let us just see I can show you a particular diagram for this. Okay. Ternary relationship I don't have a diagram.
Okay, maybe ଆମେ ternary ଟା ଟିକେ ପରେ ଦେଖିବା. We'll, we have already seen one to one, one to many, but really sure about. Okay, we have seen about primary keys, cardinality. Okay, ଆମେ आ विषୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା ଯେବେ ଆମେ we are talking about ternary relationship ଆମେ we are talking about degree more than 2 ହେଲା so ଏବେ ଯାଏ ଆମେ ଯାହା ବି ଦେଖିଛୁ mainly we are looking at binary relationship ହେଲା so ଆମେ generally we have gone for a binary relation ଯୋଉଥିରେ ଦୁଇଟା entity sets involve ହୁଅନ୍ତି so ଏଇଟା ଗୋଟେ example of a ternary relationship where we have this over here so instructor achi project achi student achi so we have this project guide okay so a student can have one project guide okay ଏଥିରେ ବି ଆମେ so this is the diagram that I'm referring to ER diagram of a ternary relationship so this is when there are more than one entity set over here ठीक ଅଛି so what are we um, so if there are more than one arrow there are two ways of defining the relationship so the ternary relationship R between A B C with arrows to B and C could mean A entity is associated with unique entity from B and C okay so ତାକୁ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ କରିପାରିବା କି जो instructor suppose I ଲେଖିବା project ଅଛି ଏଠି student ଅଛି so something like that so ଭିତରେ there could be a relation so one instructor with one student okay or one project guide with one student ସେଇଭଳିଆ ଆମେ କହିପାରିବା in this particular case over here ଠିକ ଅଛି so we'll move on ଆଉ ଆମେ ଟିକେ primary key ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ପଢିବା so primary keys if you remember these are particular attributes in a particular relation जोटा कि uniquely identifies that particular tuple so it will uniquely identify that particular tuple so हमें already हमें देखिଛୁ the example of a student roll number we'll consider as the primary key because it helps us to uniquely identify that particular student over here so, primary key provides a way to specify how entities and relationships are distinguished. ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଟେବଲ୍ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଏବେ ଯେଉଁ ରିଲେସନ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟିଟି ସେଟ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟିଟି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଅଲଗା କରିପାରିବା ହେଲା ହାଉ ଟୁ wi distinguish them so you have a group of students ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଅଲଗା କରିପାରିବା ତାଙ୍କ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ୟୁଜ୍ କରିକି we see the roll number and then tell that they are different so ଏଇ କେସ୍ରେ ଆମେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଣ୍ଟିଟି ସେଟ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ସେଟ୍ ଆଉ ୱିକଲି ଏଣ୍ଟିଟି ସେଟ୍ so ଏଇ ତିନି ପ୍ରକାର ସେଟ୍ସ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା so primary key for entity set so how do you choose the primary key for an entity set so ଆମେ ମନେ ରଖିବା entity means objects ଆଉ a collection of these objects is the entity sets okay so by definition individual entities are distinct है ना so जब हमें group करूँ समस्तों entity मान को we can assume that they are distinct from the database perspective the difference among them must be expressed in terms of their attributes so ଯେମିତି कि हमें जो हमें table नौचो table रे हमें जब तांको विषय लिखुଛୁ for example this is the student table की student relationship है ना so गोटे roll number रहिला name रहिला है ना तापरे maybe we have gender age ଏଇଭଳି ଆମର ଡେଟା ଅଛି ହେଲା so generally database ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା କି ଆମେ ଏଇ suppose this is roll number 1 roll number 2 roll number 3 तो ଆମେ ଏଇ 1 ଆଉ 2 କେମିତି compare କରିବା ତାଙ୍କର attributes compare କରିକି so we take their attributes କୁ compare କରିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ difference ଆମେ find out କରୁଛୁ so that's how we distinguish the values of the attribute values must be such they can be uniquely identify the entity so this is what the primary key is so this is what a primary key's values are so the primary key जो attribute को suppose हम roll number को primary key नौचु तो तार जहाँ भी value अच्छी सेटा कौन करिवा दरकार so it must be able to uniquely identify
particular entity. So no two entities in an entity set are allowed to have the exact same value for all attributes. So आमे जब database design करूँ आमर दुईटा tuple समान हेबा कथा नहीं है ना दुईटा tuple समान हेबा कथा. So a key for entity is a set of attributes that suffice to distinguish entities from each other. So आमे जो भी primary key आमे नोचु it can be a single attribute. एटा गोटे attribute है परे. For example student गोटे roll number आमे नहीं पारिबु सेटा can uniquely identify किंबा we can go for a set of attributes also. So एमती नहीं कि खाली गोटे हमें कंसीडर करबा एज प्राइमरी की हमें गोटे दुई तीनटा attributes को भी हम नहीं पारिबा for the primary key calling them as a primary key. So key for entity is set of attributes है ना that suffice to distinguish entities from सेटा हमको distinguish करे between the different. So to distinguish among the various relationships है ना of a relationship set we use individual primary keys of the entities in the relationship. So एबे हमें entity sets विषय कथा होतलु. Now we are talking about relationship sets. So हमें already पढ़िछु कि हमर दुईटा entities थाई पनो जे तांको भितर बहुत गुडा relationship थाई पारे ताको हमें केमती represent करूछु using a diamond. using a diamond जोटा हमर year diagram रे हमें draw करूछु सेथरो हमें आम देखे पार कि यहाँ तांको भितर रिलेशनशिप हमें आउ एई रिलेशनशिप रो भी सेट थाए. सो वी ग्रुप टुगेदर ऑल दिस कॉमन रिलेशनशिप्स इनटू रिलेशनशिप सेट्स. So to distinguish among various relationships, now गोटे relationship set रे बहुत के relation अछि तांको भितर भी distinguish करबा को चाहछि. So for that we use individual primary keys of the entities in the relationship set. So तार हम separately किसी primary key use करू ना हो but we are using the existing primary keys of the entities. जो entities जेमति कि हम instructor हमर रहला student और तांको भितर मझरे रहला advisor. So advisor जोटा हमें कथा हबा about the तार primary key खोजिबा पे we use the primary keys of instructor, primary keys of student. So instructor id, student id. So we take both of them as the primary key. So let R be a relationship set involving entities E1, E2 to En. So हमें binary situation नहीं पड़ेगा कि more than 2 भी हमें नहीं पड़ेगा. So the primary, so R is the relationship. So हमें just imagine E1, E2 अच्छी ता भीतर हमारा relationship अच्छी R. That is the relationship. So the primary, so E1 रो गोटे प्राइमरी की अच्छी E2 रो गोटे प्राइमरी की अच्छी. So R रो प्राइमरी की टा कौन होगा? The primary key of R consists of the union of the primary keys of the set E1 E2. So जो मुझे example तुमको दूसरे of the instructor and student and the project advisor. So advisor जो हमारा relationship set अच्छी तारो primary key कौन हमें हो जो is the union of the primary keys of instructor and student. So instructor id comma student id. So से दुईटा को हमें नहीं कि relationship जोटा होचे हमारा advisor तारा primary key कहि पारि. So if the relationship set has attributes a1 a2 till am associated with it, then the primary key of R also has the attributes a1 a2 till a. So this is the thing. और एटा जो मैं तुमको example दूसरी advisor रो example. So the primary key consists of instructor ID and the student ID. Instructor ID कहारो primary key, instructor relation रो student ID कहारो primary key, student relation. अब जो advisor होचे तांको भीतर जो relationship तारो भी हमें primary key खोजिले ए दुईटा को नहीं कि हम तारो primary key नहीं पारिबा. So the choice of the primary key for a relationship set depends upon mapping the cardinality of the relationship. So केतरा ता भितर columns रहबो that will depend upon the cardinality कि तांकर कोन relationship रहउची तार ऊपर डिपेंड करिवो केतरा column रहबो से primary key. So how do you choose primary key in a binary relationship? So एटा हमें गोटे situation देखुतलु of a relationship like this. We will talk about a binary relationship. So गोटे binary relationship रे केमती हमें primary key choose कर पारिबो.
So if it is many to many relationship, so many to many रे हमें देखिले कि गोटे particular entity रो गोटे entity might have multiple relationship with the other entity. How other next entity रो भी जहाँ भी हमरो entity ଅଛି ताହାର भी बहुत multiple तांकर mappings थाई पारे. Just for your reminder, I'll just show you. This is many to many. So suppose A1 has with B1, A1 has with B2 MP. It B1 be A1 sangre अच्छी A2 sangre. So that is many to many. So बहुत गुड़ा MP relationship है पारे. तो सही केस रे हमें प्राइमरी की केमते खोलि पारिबा. So the preceding union of primary keys is a minimal super key and is chosen as the primary key over here. So again हमें जो जो दुईटा एंटिटी सेट को आमे नौचु तांको भितर रिलेशनशिप काढुछु तांकर प्राइमरी की नहीं कि वी कैन मेक द सुपर की किंबा ताकू आउ भी केतरा हमें कॉलम ऐड करि परिबा. बट द यूनियन ऑफ प्राइमरी की इज द मिनिमल सुपर की माने सेटा सबटू बेसिक है ना. सो यू कैन टेक मोर कॉलम्स बट दैट इज द मिनिमल सुपर. वन टू मेनी रिलेशनशिप रे कोन रहबो primary key of the many side is the minimal super key and is used as the primary key. One to many माने so in case of one to many टिके देखिए one to many relation रे many to one रहे हाँ one to many माने गोटे particular ये attribute रो multiple आ संग्रे ये रहेगा. but जो many रो many पटु it should be only one of them. So one to many, एपटू it will not be like that. Okay, so এই figure गुड़ा automatic मन रखिबा. So just to distinguish between one to one, one to many, many to one, many to many है ना. So এই जिनसटा तमे मन रखिबा. So talking about one to one, the primary key of the many side is the minimal super key and is used as the primary. Similarly तमे देख पारिबो many to one और one to one. many to one रे कोन रहइबो जो many side रहइबो सेटा ही सुपर की रहइबो. so kind of तमे कहि परिबो one to many कि आउ many to one is very similar हैला. one to many आउ many to one is very similar. After finally we have one to one relationship. The primary key of either one of the participating entities form the minimal super key. So either one can be chosen as the primary key. And if गोटे गोटे रिलेशनशिप अच्छी वन वन अच्छी वन टू वन अच्छी यही भाई आम कहीपर वन टू वन माने एथिर जो एंटिटी हैज अ सिंगल रिलेशनशिप विथ दिस and this also has a single relationship, does not have a relationship with a third person है. so either तुम ए आर प्राइमरी की धर कि आर प्राइमरी की धर है. so both of them would be fine है. both of them would be fine in this particular case. So this is how you can choose the primary key in a binary relationship. So next I am take पढ़िबा about आ गोटे नुआ concept about weak entity sets. So I mean entity sets तो पढ़िले, we read about entity sets. What's an entity set? So basically it's a set of the different objects, different entities. For example, student is one student is a single entity. A collection of students which we are storing the data in a student table, that is the entity set. But कहा को weak entity set कहा जाए. What is a weak entity set? तो हमें जो हमें जो यूनिवर्सिटी डेटाबेस पढ़ुतलो तार गोटे हम एग्जांपल नेबा इज सेक्शन एंटिटी. so section entity कौन? So consider section entity which is uniquely identified by course id, semester, year and section id. so each section id रे हमारा primary key consists of 4 columns. So प्रथम column is course id, second column is the semester, third column is the year, और finally we have a section id. चारिटा column नहीं के तारा primary key निया हो. Clearly section entities are related to course entities. So that is obvious because गोटे section रे people will be there from a particular course. So we are looking at that. So suppose we create a section relationship set sec course. So आमे गोटे relationship बनाउछु sec course. जेमति कि आमे
स्टूडेंट आउ इंस्ट्रक्टर भितर थिला हमर एडवाइजर सेही भलिया हमर कोर्स आउ सेक्शन भितर हमर रिलेशनशिप होची tech course. So this is a relationship between the section entity sets of the section and the course. So information in sec course is redundant. kahin ki repetition hai pare since section already has the course id which identifies the course with which the section is related है so already तुम देखो कि section हमारो अच्छी section relation अच्छी already से तरह गोटे course id अच्छी तो if हमें tech course बनाऊँ हमें section रो course id और course रो course id दुईटा जाक आउ थरे माने both of them will be there तो सही केस हम कौन कर पाए so note that the information in said course is redundant since section already has an attribute course id identifies the course which the section is related. So कौन कर परिबा one option to deal with this redundancy is to get rid of the relationship sec course. So ସେଇ ଭଳିଆ ଆମେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ସେଇ ଭଳିଆ ଟେବଲ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ରିମୁଭ୍ କରିଦେବା ହେଲା ବିକଜ୍ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେର୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ନୋ ରିଡଣ୍ଡେନ୍ସି ଆଉ ତମେ ମନେ ରଖିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଟାବେସ୍ ଡିଜାଇନ୍ର आई थिंक डे बिफोर येस्टरडे रिडंडेंसी और इनकम्प्लीटनेस दुईटा आमर प्रॉब्लम जनरली थाए डेटाबेस डिजाइन रे रिडंडेंसी माने रिपीटेशन बहुत होता है सो दैट वी वांट टू रिड्यूस तो एक केस रे वी विल इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिपीटेशन हमें वी कैन रिमूव दिस सॉर्ट ऑफ टेबल however by doing so the relationship between section and course becomes implicit in an attribute which is not desirable so if हम सेक्शन कोर्स रिलेशन को काढ़ी दउछु तो हमको ताकू जानिबा पई सो सेक्शन आउ कोर्स भितरे जानिबा पई तांकर आईडी को कंपेयर करबा पड़िबो एंड दिस इज इम्प्लिसिट माने दुईटा वर्ड मते कहबा को चाहूची इम्प्लिसिट गोटे होची एक्सप्लिसिट तो इफ हमरो गोटे पर्टिकुलर रिलेशन ऑलरेडी अछि हम सेटा देखि पारुछु वी आर एबल टू सी दैट इट एग्जिस्ट्स सो डायरेक्टली हम कहि परिबा कि इटा ऑलरेडी अछि बट इफ हमको दुईटा एंटिटी सेट्स देखी कि तार एट्रीब्यूट्स देखी कि तार एट्रीब्यूट्स को कंपेयर करके हमको जानिबा को पड़ियो कि एटा आ संग रिलेशनशिप अछि सो दैट वी विल कंसीडर द इम्प्लिसिट रिलेशनशिप सो जनरली हमें जो इम्प्लिसिट जिनसटा वी डोंट वांट टू डू वी वांट दैट द relationship should be explicit we should be able to see how they are related to each other so ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା so an alternative way to deal with this redundancy is to not store the course id in the section entity ହେଲା ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏ ଯୋଉ section entity ଯୋଉଟା ଆମର ଅଛି ହେଲା section ର course id ଟା ଆମେ କାଢିଦେବା we will remove the course id so it is not to store the course id in section entity and to only store the remaining attributes section id year and semester ହେଲା तो आमे कौन कहबा कि आमे कोर्स आईडी रे जो सेक्शन एंटिटी रे हम खाली सेक्शन आईडी ईयर और सेमेस्टर रखिबा कोर्स आईडी को वी विल रिमूव दिस हैला so however the entity set section then does not have enough attributes to identify a particular section uniquely the course id काढी दबारु तांकर जो हम प्राइमरी की जोटा हम करूथलु चारिटा कॉलम है कि सेटा आउ यूनिकली आइडेंटिफाई करि पारु नाही सब गुडा तार एंट्रीज को सेक्शन एंटिटी को से एंटिटी सेट डिस्टिंग्विश कर पारु नाही so to deal with this problem we treat the relationship sec course as a special relationship so हमरो ए जो sec course अछि it's a special relationship that provides extra information हैला so कौन information in this case course id is required to identify section entities uniquely so हमें ए जो course id is very important ताकू हम न रखले से सेक्शन एंटिटी को ठीक रे डिस्टिंग्विश कर पारना तो this actually brings us to the weak entity set जोटा मोटे टाइटल देछि weak entity so weak entity set is one whose existence is dependent on another entity and is called as the identifying entity so हम ए केस रे हमर रिलेशन देखुतलो सेक्शन और कोर्स भितरे तो सेक्शन जो हमारे एंटिटी अच्छी is a weak entity set कहीं कि तार existence is dependent upon the course entity है ना so like that
So instead of associating a primary key with a weak entity, we use the identifying entity along with extra attribute called the discriminator. So it is a new term तमे देखो discriminator to uniquely identify the weak entities. जहाँ भी मैं अभी कहली we'll try to understand that in terms of section and course. So आमर जो course ID होची आमर ए discriminator. So course ID कौन करची हमको uniquely identify करबा को दउची को section और को course over here. That's how you distinguish. So if we have a weak entity आमर तापरे ଗୋଟେ corresponding strong entity set भी ଅଛି. So set entity set that is not weak entity set is termed as a strong entity set ହେଲା. So weak रे जेमती हमें हमको दरकार पड़ुतला गोटे एक्स्ट्रा जो हमर एंटिटी आ गोटे एंटिटी को यूज करके हमें ताको डिफाइन करूथलो. इन केस ऑफ स्ट्रांग एंटिटी हमको देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ दैट. So every weak entity must be associated with the identifying entity, and that is the weak entity is said to be existent dependent है. So weak entity रहिबार depend माने रहिबो सेतलागी it requires another entity to do the identifying. So identifying entity is said to own the weak entity set. So the relationship associated with the weak entity set with the identifying entity set is the identifying relationship है. So बहुत गुड टर्मिनोलॉजी सेठी अच्छी. So but try to understand in terms of section now course. Section now course जो जहाँ मैं describe करी example section course and course ID सेमती भाବରେ तमे ताको मन रखी पारिबो ହେଲା. So yeah, so here is the section and course तमे देखि पारुछो. हम ER diagram रे ताको केमती देखि पारिबो. ER diagram रे the weak entity set is depicted with a double rectangle. तमे मन रखिबो कि जोटा सिंगल जो रेक्टेंगल एटा होची the normal हमरो जो entity set course. But weak entity set माने जहार definition पाई हम डिपेंड करूछु अन्य गोटे टेबल ऊपर ता एंटिटी ऊपर ताको हम डबल rectangle एटी तमे देखो section is a weak entity, so it has been identified with a double rectangle. Is denoted with a double rectangle. Now we underline the discriminator of a weak entity set with a dashed line. So गोटे weak entity रो जो primary key रहिबा ताको हम dashed line use करके हम define करि परबो. So it is section ID semester here और it course ID रहला. Course ID आसबो एपट है. So relationship set connects the weak entity set to the identifying entity depicted by double diamond. There be double diamond अच्छी. Double diamond shows that जोटा double rectangle थिला is the weak entity और जो तार identifying entity होची जहाँ संगरे तार relationship अच्छी होगी. So the primary key for section is course ID, section ID, semester और here. So एई जो diagram अच्छे ताको देखी कि तुम्हें এই জিনিসটা বুঝিবা দরকার. That's what we have in this particular. Next ଆମେ କଥା ହବା about the redundant attributes. Redundant ମୁଁ बार बार कहूची is repeated. So if we have some attributes that are repeated, so suppose we have entity sets. ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟା entity set ଅଛି student ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର department ହେଲା. Student ର କଣ କଣ attributes ଅଛି अच्छी ID name total credit ଆଉ name. तो चारिटा हमर एठी attribute रहला ID name total credit ଆଉ department. then ଆଉ गोटे हमर department entity अछि तार कोन अछि department name building ଆଉ budget तार तीनटा attribute अछि. तुम एठी पिक्चर भी देखि पारुछ. we have this student rectangle entity set तार जो चारिटा attribute अछि लेखा है. डिपार्टमेंट रो तीनटा एट्रिब्यूट अछि डिपार्टमेंट नेम बिल्डिंग और बजट रहिछ. So we model the fact that each student has an associated department using the student department relationship. So प्रति स्टूडेंट गोटे डिपार्टमेंट को बिलोंग करबे जेमति माने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को बिलोंग करछ. सेही बढिया भाबरे हमर जो स्टूडेंट डिपार्टमेंट रिलेशन अछि एटा ए दुटा एंटिटी को जॉइन करबो. So the attribute
department name, okay, in student below replicates information present in the relationship. It is therefore redundant over here. So for example आम देखा स्टूडेंट रे भी आमर ये डिपार्टमेंट नेम अच्छी देख डिपार्टमेंट नेम रहा और डिपार्टमेंट रे भी डिपार्टमेंट नेम रही है सो दुईटा जगह आमर यहाँ रिपीटेशन हो मे बी ताकू आई विल जस्ट सर्कल इट विथ अ डिफरेंट कलर मे बी जस्ट to indicate so department name department so there is a repetition in this particular case over there so हम कौन करें so the department name replicates information present is therefore redundant and needs to be removed so generally हमें चाहूँ कि repetition जमते न रहे repeated attributes no but when converting back to tables in some cases the attribute gets reintroduced so आम जब ईआर डायग्राम रे सेटा देखिए मे बी आम काढ़ी दे पारू बट आम जब ताकू टेबल बनवा को जाऊँ तेबे हमको दरकार पड़ पारे देन वी माइट नीड इट अदरवाइज हमको हम ताकू यूनिकली आइडेंटिफाई करबा किंबा रिलेशनशिप क्रिएट करबा डिफिकल्ट हो जिवो तो आमे जहाँ भी एबे कथा हल सो वी हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ डिफरेंट ways how what is the एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल तार जो डिफरेंट आस्पेक्ट्स आम पढ़िलु आउ ईआर डायग्राम रो वेरियस कंपोनेंट्स पढ़िलु केमती आम एंटिटी सेट्स बनै परिबा तांकर केमती रिलेशनशिप सेट्स बनै परिबा केमती रिलेशन को देखे परिबा तो डायरेक्शन आम देखे परिबा वन टू मेनी मेनी टू वन से देखे परिबा कार्डिनलिटी बनै परिबा बहुत गुड जिंस आम करि परिबा सो इफ यू रिमेंबर आम जोटा एसक्यूएल रे पढ़िला बेले आम यूनिवर्सिटी रो स्कीमा जोटा बनौलु सो दिस इज द ईआर डायग्राम फॉर दैट है सो जब भी तुम किसी प्रोजेक्ट बनइब है बी इट वेब एप्लिकेशन किंबा गोटे किसी मोबाइल ऐप बनइब जहाँ भी बनइब तार जब तुम डेटाबेस बनाऊच बिफोर गोइंग फॉर द स्कीमा है बिफोर गोइंग फॉर द स्कीमा तुमको यही भाया डायग्राम जोटा तुम देखुच यही भाया डायग्राम तुमको बनइबा को पड़ो दैट इज द ईआर डायग्राम है जनरली गोटे ईआर बनाऊ आम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तुम जब पढ़ो तब डीएफटी विषय पढ़ो दैट इज द डेटा फ्लो डायग्राम विषय पढ़ो सो जनरली जहाँ भी गोटे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना जाए प्रोजेक्ट रिपोर्ट रे ईआर डायग्राम गोटे थाए डीएफटी थाए तापर तुम स्कीमा थाए स्कीमा डायग्राम को तापर इम्प्लीमेंट करा जाए डेटाबेस तो मुझे टाइम स्पेंड करी नहीं ये जिनस को बुझापी तुम प्रिवियसली आम जी भी जिनस कथा तो स्पेशली दी ईआर डायग्राम रो जहाँ भी आम केमिति ईआर डायग्राम केमिति बना जाए से पर्टिकुलर जिनस तुम ताकू ध्यान रे रखिबो सो सेटा सब पढ़ी तापर तुम यही पर्टिकुलर जो पिक्चर रही यूनिवर्सिटी एंटरप्राइज रो तार डायग्राम बुझी पारिबो आम केतरा एग्जांपल ऑलरेडी नहीं जाइछु जेमति कि फॉर एग्जांपल लेट्स सी स्टूडेंट रहिला आ इंस्ट्रक्टर आम एटा गोटे डील करिछु इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट विषय डील करिछु एडवाइजर तुम देखि पारछु रिलेशनशिप अछि ओ प्रोजेक्ट एठरे नाही ओके प्रोजेक्ट नहीं किसी प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट आउ डिपार्टमेंट रो एग्जांपल पे हम देखि सर अन्य केतरा भी रिलेशन रही जमती कि सेक्शन ऑफ कोर्स सेक्शन ऑफ कोर्स हमर क्लासरूम टाइम स्लॉट ये सब अलग हमर रिलेशनशिप अच्छे से ता विषय आम कथा हेबा नहीं बट तुम ये देखिए जानी पारुथबो हला तुम यू शुड बी एबल टू लुक एट दी so this is all about the ER diagram enterprise and uh, entity relationship जो मॉडल रही आमर एंटिटीज कौन एंटिटी सेट्स कौन रिलेशनशिप कौन रिलेशनशिप सेट्स कौन दिस इज क्लियर फ्रॉम सो जनरली हमें जो डिजाइन फेज को आउ थे जीवा डिजाइन फेज रे हमें फर्स्ट प्रॉब्लम को बुझुचु वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड देन आम गोटे पर्टिकुलर डेटा मॉडल अप्लाई कर केस रे आम ईआर रिलेशनल डेटा मॉडल अप्लाई करके तो हम ईआर डायग्राम बने दिस इज ये जो आम देखुच इज द कॉन्सेप्चुअल फेज है कॉन्सेप्ट डिसाइड करदेलु कि आम डेटाबेस एमती देखा तो द नेक्स्ट set of slides mobile जहाँ अच्छी this is from how to move
from this conceptual model into the actual model ହେଲା ଆଉ କେମିତି ଆମେ जोटा ଆମେ ଏବେ just suggest କରିଛୁ ସେଇ diagram suggest କରିଛୁ how we can reduce that into a relational schema so relation माने मने रखिबा relation is the table ଆମେ जहाँ database table संगे deal करूଛୁ so relation is the table so हमें ये जो diagram को केमती table form को नहीं पारिबो so how will we convert it into the table form of it. So entity sets and relationships can be expressed uniformly as relation schemas है so relation आपको generally ER diagram को हमें relational schema में बनाओ so this represents the contents of the database over here so database which confers to an ER diagram can be represented by a collection of schemas है so हमें जो ER diagram को अब schematic diagram बने relational schema diagram हमें बनाना so for each entity set relationship set there is a unique schema है ना so जो schema is the structure so structure हमारा so entity set जहाँ हम ER diagram रे draw करूँ ताकू हमें convert करूँ schema रे so what do we do here so for each entity set है each entity set or relationship set there is a unique schema that is assigned the name corresponding to this जो ER diagram रे जहाँ entity set रो ना थिबो सेटे relational schema रे तार सेही ना रहिबो so that's how we name each schema has a number of columns and which has unique names so प्रति schema जोटा हम कहू relational schema माने table रो जो columns रहिबो it again will depend upon the ER diagram रे entity sets रो entity ऊपर depend करिबो जहाँ जहाँ entities entity रो attributes जहाँ रहिबो सेटा that will be the columns in the table over here so ଆମେ କେତେଟା example ଏଠି ଦେଖିବା how do you represent the entity sets into a table so a strong entity set reduces to schema with the same attribute ହେଲା ମନେ ରଖିବ strong entity ମାନେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ entity ଦରକାର ନାହିଁ ମାନେ in the sense you don't need a extra entity to define or to discriminate the entities okay so strong entity is self contained ताको कुछ extra entity तो दरकार नहीं so strong entity set reduces to a schema with the same attribute so student जो हमर entity set थिला ताको हमें स्टूडेंट रो स्कीमा केमती बनेबा स्टूडेंट आईडी नेम टोटल क्रेडिट आउ गोटे अंडरलाइन तमे देखो दिस इज द प्राइमरी की of the particular student relationship but what about a weak entity set a weak entity set becomes a table that includes column from the primary key of the identifying strong entity set so जब हमें ER diagram रू relational schema को convert करूँ then for a weak entity set for example जो section हमें देखिलो that is the weak entity set तारो जब हमें column सब बनाऊँ जो प्राइमरी की रहुची आइडेंटिफाइंग स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट रो तार प्राइमरी की भी इंक्लूड करबा दरकार तो इवन दो ईआर डायग्राम रे हम काढी दे पारू बट जेबे ताको हम रिलेशनल स्कीमा रे कन्वर्ट करू छु दैट पर्टिकुलर कोर्स आईडी जोटा हमर प्राइमरी की ऑफ द कोर्स एंटिटी थिला जोटा कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी ताठो हमको आनिबा को पड़बो so this is how we generally do this strong entity केमती कन्वर्ट हबो weak entity केमती कन्वर्ट हबो तमे एथरे देखि पारछो ओके एंड इट इज पॉसिबल कि जोटा हमर कॉम्प्लेक्स एट्रिब्यूट्स विषय हम कथा हेलो किंबा ताको कंपोजिट भी कुहा होची तो कंपोजिट एट्रिब्यूट कोन हम पढिले इज तार गोटे गोटे कंपोजिट एट्रिब्यूट देयर माइट बी मेनी कंपोनेंट्स हला जेमति कि नेम हम बुझलु इज अ कंपोजिट एट्रिब्यूट it has first name middle name last name तार बहुत गुडा एट्रिब्यूट्स थाई पार तो सेटा को केमति हम कन्वर्ट करबा तो कंपोजिट एट्रिब्यूट्स are flattened out by creating a separate attribute for each component attribute है मु जहा कहउतले नेम रो जो तीनटा पार्ट हमर रहउची फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम वो हम सेपरेटली एबे रखिबा तो ई तुम देखि पारुछो डायग्राम तुम देखि पारथो तो गिवन entity set instructor with the composite attribute name कौन components अच्छे हमारा first name last name corresponding to the
so the schema रे कौन रहइबो सेटा name first name and name last name एई भलिया हमर रहइबो so prefix omitted if there is no ambiguity so first name can be first name itself ହେଲା so सेई भलिया तमे करि परिबो in this particular case. So ignoring the multi-valued attributes, extended instructor will look like this. Instructor schema. So एटा हमर ER diagram तुम देखि पारछो. So this is made into this is the schema. Relational schema. Instructor कौन रहला ID रहला ଆଉ जोटा name थिला ताकू भांगी के तापर हम first name middle name last name कर देलु. Street name ऐसा जो address रे भी composite address composite attribute आइटा माने street भितरे तमरो रहिची street number, street name, apartment. So basically, our address also consists of many things. Maybe it could be village, block, district, house, state. Say we can distinguish the entire thing. That could be convert koruchu. All right. So this is another example. I'm representation of entity sets with multi-valued attributes. So multi-valued attribute M of entity E is represented by separate schema EM. So if multi-valued attribute अच्छे जमती के थे हमें देखो जो phone number रे essentially India रे तो if everyone has a cell phone so हमें +91 जनरल लगो जो area code आउ तापर phone number अच्छे. Imagine टिके आगो कालो रे there used to be landlines. दूसरे की प्रति state रो किंबा जगह रो there used to be STD code. There used to be a code तापर तार phone number थला. That is a multi-valued attribute. माने गोटे phone number गोटे ही हमें बुझुचु but ता भितरे there are multiple components as well. So a multi-valued attribute सही भलिया हमर जो multi-valued जोटा अछि ताको represented in a separate schema. ताको गोटे अलग schema में करू. So schema EM has the attributes corresponding to the primary key of E and an attribute corresponding to the multi-valued attribute. So ये phone number अच्छी हम ताको गोटे separate table रे ही पके दो. तो primary key थिबो ता संगे phone number भी आई पारे. So it is गोटे देखिबा multi-valued attribute phone number. The instructor is represented by the schema ID phone number हैला. So ID टा कौन instructor ID जोठो आसला phone number because it is multi valued attribute. So there are multiple values. Each value the multi valued attribute maps to a separate tuple. So this is how the things actually appear in this particular. And then amar rahila ki if how do you represent the relationships? Entity विषय में कथा हेले weak entity विषय कथा हेले strong entity विषय कथा हेले what about the relationships? Relationship sets को हमें केमिति represent करि पारि. So a many to many relationship set is represented as a schema with attributes for the primary keys of the two participating entities. गोटे मु कहउतली और instructor and student रहला गोटे instructor ID अछि student ID अछि तो advisor जहाँ relation this is the relationship. So advisor रो जो हमर entity सब रहउछि primary key of one particular type primary key of next particular type. So ये दुईटा हमें नउछु to represent the schema over here. And there could be some redundancy of schema. There might be some repetitions. I hope repetitions type so many to one and one to many relationships there are total and the many side can be represented by an extra attribute to the many side. So it would example देखिवा instead of creating a schema for institute department okay instructor department add an attribute department name to schema arising from the instructor. So this is the idea कि instructor department न बने की है so instructor department न बने की तमे कौन करो is basically जो department name को add कर दिया instructor. So we don't want to create an extra schema department name because it बहुत जगह repeat है बस इसलिए कि हमें ताको
ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ସୋ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟେବଲ୍ ଆମର ରହିଯାଉଛି। ସୋ instead of doing that ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେମ୍ ଆମେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟରେ ଆଡ୍ କରିଦେଉଛୁ। ଓକେ, so for one to one, either side can be chosen to act as many side. Yeah? So this is the thing in that particular. So I will stop here. Almost 1 hour ମୁଁ କହି ଚାଲିଛି। So if କାହାର କିଛି डाउट अच्छी अच्छी जाए, सो आमे बेसिकली कौन कवर कलु मु आउ थरे टिके आई वांट टू जस्ट रिवाइज क्विकली। हम पढ़िलु हाउ टू रिप्रेजेंट दी कार्डिनालिटी को केमती रिप्रेजेंट करा जाय पारे एई फॉर्म रे l डॉट डॉट h, l इज दी मिनिमम कार्डिनालिटी, h इज दी मैक्सिमम कार्डिनालिटी। तो 1 to 1, 1 to many, many to 1 को आमे केमती रिप्रेजेंट करि परिबा तमे एथरे तमे देखि परिबो बोले ना। तापर आमे देखिले कि प्राइमरी की को आमे केमती चूज करू, गोटे एंटिटी सेट रे कोन प्राइमरी की नहीं था, रिलेशनशिप रे कहा को प्राइमरी की नहीं था हैला। सो एंड जो रिलेशनशिप मेनी टू वन ता भीतर कोन प्राइमरी की मेनी टू वन, वन टू मेनी, तो सेटा सब आमे देखिलो। नेक्स्ट आमे पढ़िलु अबाउट दी व्हिच इज द वीक एंटिटी सेट। कहा को वीक एंटिटी सेट कहा जाए जहार हमको गोटे पर्टिकुलर एंटिटी सेट को आउ गोटे एंटिटी सेट दरकार टू डिस्टिंग्विश द डिफरेंट एंट्रीज ओवर देयर। so it depends upon the identifying entity है। so आउ गोटे हम देखिले स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट जहाँ को दे डज नॉट नीड an external entity set to identify the different entities over here। so next जो set of attributes हम देखिले is how to convert a particular ER diagram into a relational schema over here। so एटा सब हम देखी छे। तो मु चाहिए कि तुम आउ थे यू जस्ट गो थ्रू काली आम होपफुली वी विल फिनिश दिस पर्टिकुलर ER डायग्राम्स। तो मु जानी काली आम करिपरिबा नहीं, मे बी काली करिपर, मे बी सैटरडे रे आम केतरा ये करबा ऊपर एक्सरसाइजेस करबा so that you will be able to find out over here। so if कहारो किछि क्वेश्चन अछि, any questions till now you may ask। आउ थे मु रिक्वेस्ट करबा को चाहूची, if मु जो बही रेफर करूची, if anybody wants copy of that, आज सकाळे I think one of you sent me a request, तो मु तांको शेयर करची because again there could be some copyright issues, so मु directly एटा मु शेयर करबा को चाहू नहीं। if you want I can send it to you personally, but you will have to send me a message so that I can send the book to you। if kaharo kichi questions achi mate pachari paribo। so this is the book again, 7th edition database system concepts। ame currently पढ़ुछु database design हैला। so 6th chapter database design using ER model हैला। एटा ame पढ़ुछु। we have gone up to 6.7 है 6.1 ରୁ 6.7 ଆମେ ପଢି ସାରିଛୁ and ଆମେ ଯାହା rest ରହିଲା ଆମେ ସେଇଟା ପଢିବା over here है। so ସେଇଟା ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା। so this particular book is very helpful in the sense ଏଇଟା ତମ course ସବୁ components को cover करूଛି, as well as there are more extra stuff over here। so darkar padke you can always refer to this book in the future as well। ଆମେ ସବୁ ଗୁଡ଼ା chapter आ भितर पढ़ुनु, ଆମେ according to our syllabus जोटा हमर दरकार सेही particular portions ଆମେ पढ़ुछु, ठीक अछि। so if काहार किछ question अछि you let me know, नहले we will stop here, ठीक अछि। I will stop here। काहाको किछ पचारिबार अछि मते पचारो, you can log out of the class। if there are any questions I am here to answer that, otherwise if you are done jai pariba for the next class।